guys, Subcontinent team here. My name is Manish. मेरे साथ है ओमकार. Hi guys. चलो guys, first of all हम आपको अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि Subcontinent ओडिसी ये चैनल का नाम हम लोग ने क्यों रखा. देखा जाएगा तो Subcontinent ओडिसी के फाउंडर मेंबर्स हम लोग चार हैं. Myself मनीष, मैं खुद फाइनेंस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ. ओमकार, he is into videography and graphic designing. Third person is अविनाश, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड है. फोर्थ है प्रीतम, he is into hotel industry. So basically guys, Subcontinent ओडिसी ये चीज़ हम लोग दिमाग में क्यों आई, बिकॉज एज अ इंडियन हम लोग तो काफ़ी पॉजिटिव साइड से देखते हैं सबकॉन्टिनेंट को, एंड देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स, लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हम लोग क्लियर करने का था. एंड देखा जाएगा तो सबकॉन्टिनेंट इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, वी आर ऑल वन पीपल. हमारा कल्चर काफ़ी सिमिलर है. ओवरऑल द वे वी थिंक, हमारा आइडियोलॉजी, ईच एंड एवरीथिंग इज क्वाइट सिमिलर. तो बेसिकली हम लोग चैनल का यही मोटिव है कि हम लोग सब कॉन्टिनेंट को इन अ पॉजिटिव वे, इन अ ब्रॉडर वे और अनएक्सप्लोर्ड वे, काफ़ी सारी चीज़ पता नहीं है पब्लिक को कि सब कॉन्टिनेंट कैसा है, क्या है. लॉट ऑफ यूरोपियंस या फिर बहुत सारे अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में सब कॉन्टिनेंट के बारे में काफ़ी सारे मिथ्स है, वो हम लोग क्लियर करना है एज अ सब कॉन्टिनेंट. सो बेसिकली एक्चुअली जो भी डाइवर्सिटीज है, जो भी डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटीज है, यहाँ पे जब भी आप आओगे तभी हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख, क्रिश्चियंस, ये सब जो डाइवर्सिटीज है उनके एक एक कल्चर के ऊपर हम लोग प्रॉपर ऐसा जस्ट हम लोग फोकस करने वाले हैं उसके ऊपर. इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें आने वाली हैं. सो गाइज, इस चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए. तो चलिए एक्चुअली चालू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो है इंडिया एज अ सबकॉन्टिनेंट. या व्हाट इफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज यूनाइटेड? क्वाइट यूनिक टॉपिक है. लेट्स सी हाउ इट इज. देखते हैं. This video was made possible by Squarespace. Start building your website for free at squarespace.com/RLL, and then when ready to launch, use the code RLL to get 10% off at checkout. The Indian subcontinent is huge, not only in terms of sheer land area, but also in terms of the region's population and cultural impact on our world. Currently, 7 different countries exist in the region: India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Bhutan, and the Maldives. 7 So, countries. what would it look like if all 7 of Maldives these and modern 7 countries countries. united overnight to form a new and larger country that we'll be calling for simplicity Greater India? Well, for starters, the new country's population would be gargantuan. 1,728,904,000 people, or about 23% of the entire world's population. Almost 1 out of every 4 people. That is more people than live in North America, South America, the Caribbean, and Europe combined. India alone has more people living there than the entire continent of Africa does, and that's only going to increase as time goes on. This can also be seen by taking a glance at the biggest cities across the new country, the top 3 being Delhi, Karachi, and Mumbai, all of which have higher populations than even New York City does in the US. Of the country's top 10 largest cities, 7 of them would be located in India, while 2 would be in Pakistan, and only 1 in Bangladesh. जो भी population है, majority ये major जो cities में वही है. Subcontinent, dominating the region's gravity and the smaller countries that orbit it by its sheer size. But what happens when we quit looking at the subcontinent divided by current political reality? If we look at an ethnic map of the area, it's confusing to say the least. There are over 2,000 different and unique ethnic groups present inside of India alone, in addition to 22 different major languages. Only the continent of Africa has a higher diversity of cultures, genetics, and languages than India does. But most of these Indian ethnic groups can be divided between 2 major families: Indo-Aryans, which account for 73% of hypothetical Greater India's population, and Dravidians, which account for 19%, with the remaining 8% being a mix of other, smaller groups. To expand on that, the region's linguistic diversity is every bit as diverse as you would expect. About 1/3 of the population would be able to speak Hindi, 15% would speak Bengali, another 12% would understand Urdu, while the Punjabi, Marathi, Telugu, Tamil, and Gujarati languages would all have significant representation as well. 4 of the world's most significant religions were born inside India: Hinduism, Buddhism, Sikhism, and Jainism, all of which continue to have a significant presence. Hinduism would make up the vast majority of hypothetical Greater India at 63.6% of the population,
while Islam would be a significant minority at 31.4%. Christians would only make up 2%, Buddhists would be represented by 1.7%, and Sikhs would make up the final 1.3%, with other religions only having a tiny following. About 34% of Greater India's population would be living in cities, with the remaining majority of the hypothetical country residing in the countryside. Perhaps the most challenging problem for the new country would be the region's economy. Hypothetical Greater India would have a combined nominal GDP of $3.4 trillion, which would make it the world's fifth largest economy. But considering that India alone is already the world's sixth largest economy, all of the additional countries added would only make it surpass the United Kingdom's economy, while remaining just behind Germany and Japan. In terms of GDP per capita measured in purchasing power parity, the average citizen of this country would be earning $7,265 per year, far below the global average of $17,300 per year. Citizens, on average, would be earning more than citizens of Uzbekistan or Vietnam, but earning less than those of Bolivia or the Philippines. The economy would, however, be capable of supporting a very large military budget of $83.8 billion, the third highest budget in the world, but significantly behind the budgets of both China and the United States. Adding in the soldiers from all 7 foreign countries, the hypothetical Greater Indian Army would have an active duty force of 2.6 million soldiers, the largest standing army in the world, with an additional 2.1 million in the reserves, which combined would give the new country the world's 4th largest total military size, behind Vietnam and the 2 Koreas. In the event of a war, however, Greater India would have the largest manpower reserves in the world to pull from. Some of the new nation's greatest problems would be its high unemployment rate, currently hovering around 10%, and the very young age of the average citizen, just 27.6 years old. This might not be a huge problem now, but as India and the rest of the region develops further, it's almost a guarantee that the country will face the same kind of demographic problems currently plaguing places like Japan, where the average age is a very high 47.3 years. Somewhere around 50 years from now, when India's population has likely begun to stabilize around 1.7 billion people, their population will thereafter begin to shrink, just like it is in Japan and other developed countries around the world. Perhaps India and the entire region at large can learn from how currently developed countries are handling their demographic issues to prepare for their own future, just like how you can prepare for your own future or your company's future by going over to Squarespace next. Regardless of what it is you do, whether it's podcasting, art, blogging, or you're looking to create your... कैसा लगा बोल दो? बहुत सही था, मुझे इतने चीज़ें पता भी नहीं थी एग्जैक्टली अगर ये पूरा का पूरा जो 7 कंट्रीज है एक साथ आ जाएंगे, मुझे ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल पता नहीं था. अपन लोग जस्ट एक मतलब ऑन अ ग्लोबल फ्रंट बहुत ही आगे चले जाएंगे. मेरा तो यही रहा है. सब कॉन्टिनेंट एज अ यूनाइटेड सब कॉन्टिनेंट देखा जाएगा तो प्री इंडिपेंडेंस हुआ करता था, लेकिन एज ऑफ नाउ अगर देखा जाएगा तो इंडियन इकोनॉमी इज बूमिंग, बांग्लादेश इकोनॉमी इज बूमिंग, पाकिस्तान का इकोनॉमी भी काफी अच्छा हो रहा है ड्यू टू पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, श्रीलंका इज डूइंग गुड. तो बेसिकली देखा जाएगा तो सब कॉन्टिनेंट एज अ ओवरऑल काफी सारा मैन फोर्स है, वर्क फोर्स है यहाँ पे, व्हिच इज क्वाइट स्किल्ड. एंड एक मिथ है ना पुराने टाइम से कि इंडियन इकोनॉमी हो या सब कॉन्टिनेंट इकोनॉमी खाली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, वो तो पूरा अभी हो जाएगा बिकॉज इंडिया में काफी सारा, इंडिया इज आईटी हब, इंडिया में काफी सारे ऑटोमोबाइल जापान मैन्युफैक्चर हो रहा है. जो डेवलपिंग कंट्री है वो तो एग्रीकल्चर पे ही आगे बढ़े. उसका जो मेन कंट्रीब्यूशन जो होता है जीडीपी के लिए, तो उसके लिए तो एग्रीकल्चर की होती है. लेकिन इंडिया को अगर अभी आप देखोगे ना तो कैसा होता है ना, अभी मैं देख रहा हूँ कि एग्रीकल्चर तो है, उसके बाद में टूरिज्म भी हो रहा है, टूरिज्म भी बूम हो रहा है, उसके बाद में और आईटी भी हो रहा है, आईटी भी काफी बूम हो रहा है. तो यही फुटस्टेप्स पे अगर दूसरे जो कंट्रीज है ना वो भी आगे बढ़ेंगे ना, जो ये 7 सबकॉन्टिनेंट्स वाले, वो ग्रेटर इंडिया जैसे इसमें बताया वो बहुत ही, इवन मैं तो बोलता हूँ यूएस को भी हम लोग को ओवरटेक कर सकते हैं गाइस, डेफिनेटली इफ वी स्टे यूनाइटेड और हमारी सोच एक जैसी हो, बेसिकली वी कैन ग्रो एग्जैक्टली. और मैं तो एक्चुअली ये सोच रहा हूँ कि अब भी इसने जो ये जो वीडियो है जिसने भी बनाया बहुत अच्छा वीडियो बनाया है. और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं जो ये बोलना चाहता हूँ कि कराची, दिल्ली और मुंबई यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर लिविंग इन दिस मेट्रोपॉलिटन सिटीज, राइट. इसके अलावा अगर ऐसे और भी 7-8 सिटीज बने
right? I guess you can include Dhaka also, right? Dhaka is like quite ढाका booming में है. लाहौर भी लाहौर भी है पाकिस्तान में, लाहौर भी और श्रीलंका में भी I don't कोलंबो, remember कोलंबो है. राइट राइट. Yes. तो ऐसे सब मेजोरिटी जो सिटीज है Yeah. वहाँ पे अगर सपोज कोई आईटी हब Yes. वगैरह ऐसा बनाया जाए तो एम्प्लॉयमेंट का इशू जो अभी इन्होंने बताया था वो भी रिजॉल्व हो बेसिकली जाएगा. एम्प्लॉयमेंट का इशू वही है कि पॉपुलेशन काफी ज्यादा है और सेकंड थिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है. लॉट ऑफ Right, पीपल फ्रॉम सबकॉन्टिनेंट गो एंड सेटल इन यूरोप या फिर नॉर्थ अमेरिका, वो तो है. यूएस में आके सेटल्ड होते हैं. लेकिन एज अ सबकॉन्टिनेंट यहाँ पे भी काफी सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकते हैं इफ वी Right. स्टे यूनाइटेड. या फिर बहुत सारे टाइम में यूरोपियन यूनियन में कैसा होता था राइट राइट वैसा एक हमारे भी एक यूनियन होना चाहिए. रादर देन फाइटिंग, रादर देन क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट इफ वी स्टे यूनाइटेड काफी सारी चीज अच्छा हो सकता है. राइट. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. यस गाइस, आई होप गाइस, देखते हैं. आई होप गाइस आपको हमारा ये वीडियो काफी पसंद आए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल. टिल देन, स्टे यूनाइटेड, स्टे ब्लेस्ड. बाय Bye guys.